Welcome to Codigion. Our today topic is about user and kernel space and compiler debugging using GDB and radar. Python uses interpreter, Python ideally, and C uses compiler like GCC, Turbo C++, and else. This is the compiler, and there are compilers version 2. So let's start. First, I will explain you line by line. First, we will make an C program. First we will include stdio.h, means this is the header file, so we can work in with it. So we will do void main, and we will open this parenthesis and printf hello India. So we will just compile it. GCC is a compiler, so a dot out. So you can see hello India, but it's not coming next line. It's coming in next line, but it's not giving one more line. So let's give one more time. A dot on. See, it gives /n means new line. So we will create an Python file too. .py. So we will give print hello world. Python 3. So it's giving me hello world with /n. By default, it contains /n in the last. So we have to remove that first. So we can remove, but it's not necessary. But sometimes it's necessary in some programs. /n. Oh, sorry. Like this, we have to give Python C. What is the difference between compiler and interpreter? So I will just show you now. Let me just clean my terminal and c.c. Control L for cleaning the terminal. So this is an Linux-based terminal. We have made a program, but we will do some technical issue in this program. Like this, we will end and tell him to print. It will not print. So it gives an add-on, and the compiler is so intelligent, it giving me warning what to do, what I have to do. See, you have not given this token and before this token, and if we added our p.py and give some gibberish in here, so Python will print the first line, but it can't print the second line. See, it's printed the first line, but without /n. You have understand what I have told about /n. Now I will just erase this and again run this program. See, it's coming in the new line, trace back forwards, and DWD is not defined, but it's still working. The program is still working due to interpreter. You have understand the compiler and between the compiler and interpreter. So how does a compiler designed? Let me just scroll up. Just I have to see the main motive. Our main motive is to see compiler. How does a compiler work? So it's take a C file like our c.c file, then it's converted into library file, expanded library files.
like glib and glibc, we can tell us, and then it's compiled to assembly file. When it's compiled into assembly file, the several process goes on, but we can't see that processes directly, but we have to see indirectly. An object file, library file plus other object files are linked to the hello.o, means object file. This is an object file which is not readable by human. Till here is readable by human. Till here, and this is not readable by human, and this too, because this is a binary file. Means this is not a binary file, but it is combination of this whole file, to the endpoint, because this is called as compiler. uh, so this is finished, and now is about one more topic I want to talk about, and it is about S trace and L trace. Just ignore this nonsense, and just we have to focus in our S trace and L trace. S trace means system call interference. What is system call now? What is system call? When and प्रोग्राम कभी भी जो प्रोग्राम कॉल होता है हम लोग का, जब भी हम लोग का कोई प्रोग्राम, जैसे हम लोग C.C के प्रोग्राम को हम लोग रन कराया, तो ये एक तो प्रोग्राम है, ठीक है। ये प्रिंट एफ लिखा है ना वहाँ पर, वो क्या कर रहा है, हम लोग का यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर हम लोग का स्ट्रीम में प्रिंट कर रहा है। वो आखिर की क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि क्या बोलता है, हम लोग का जो कर्नल है वो इंटरेक्ट करता है राइट से, मतलब वो एक तो राइट फंक्शन होता है, वो इससे इंटरेक्ट करता है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर आउटपुट दिखाई देता है। ये करना इतना आसान नहीं है, जो वो प्रिंट करता है ना स्क्रीन में, वो इतना आसान नहीं है। पर हम लोग वो तब जाके हम एक लाइन का कोड लिखते हैं, तब जाके हम लोग को पता नहीं चलता है। पर several processes are behind that run and leads to execution of our program. So let us see what is L trace. I want to say S trace. S trace. You can say S trace. Sorry for the bad writing, but anyway, what is S trace? S trace is about system call trace. मतलब सिस्टम कॉल को ये ट्रेस करेगा, जो भी सिस्टम कॉल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको ट्रेस करेगा। और एल ट्रेस मतलब, यहाँ पे एल ट्रेस का मीनिंग यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। एल ट्रेस का मीनिंग क्या है हम लोग का, यहाँ पर सिस्टम लाइब्रेरीज, जो भी हम लोग का, जो हम लाइब्रेरी का बात कर रहे थे ना आपको, वो .h में या प्रिंट एफ में भी तो कोई लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज होगा ही ना। प्रिंट एफ का कोई तो इसका वो होगा, जैसे डिपेंड, जैसे हम लोग पैनल्स के ऊपर डिपेंड है, और हम लोग किसी और चीज़ में भी डिपेंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंसीज। और हम लोग एल ट्रेस होता है मतलब हम लोग का जो भी प्रोग्राम चल रहा है, एल ट्रेस होता है जो भी हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है, वो इसका लाइब्रेरी कैच करके हम लोग को दिखाएगा। जो भी हम लोग का लाइब्रेरी चल रहा है उसका वो कैच कर लेगा और हम लोग को यहाँ पर स्क्रीन में प्रिंट करके दिखाएगा। So let's take an example. I think you have not understand till now. S trace a dot out. So we have used if you see this program again, C.C, you can see it's about printing. Just wait, I have to remove this. And now, so now you can see this is a simple program of C to print a statement in screen. So what I will do, S trace, and now I will do run this program, a dot out, S trace. You can see what how many things are going on in this program. This is execution in this file, means this is an execution which is execution this programming, and how much execution is going on, and in which address this is going on, and how much bash is storing, like how much space is taking this program in the memory. Memory is managed by MUI, means memory unit system.
So it's so this is not a thing. We have to just ignore this sometimes. Sometimes just we are seeing this. See, our print have been changed into write. So how is possible? No. So hello India, and it's taking 12. Means if you count this hello India, it will return as 12, including this slash n. It will give n 12. So how's going on? Things are going. So let me check. Let me show you this thing. Mm. Okay. Nano user. Let me take you. Yeah. This is the directory in where we invoke our kernel syscall. This is the directory we invoke our system call. मतलब यहाँ से हम लोग का सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है. ये बस यहाँ पर डेफिनेशन से हुआ है कि हम लोग को कौन सा चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल करना है. ये हम लोग का असेंबली लैंग्वेज में काम आएगा. तो जाके हम लोग लिखेंगे ना इंग्लिश असेंबली लैंग्वेज, तो जाके हम लोग को ये फाइल काम आएगा. अभी के लिए हम लोग को काम कोई नहीं आएगा. बस खाली समझने के लिए हम ये फाइल को दिखाया आपको. अभी मैं आपको दिखाऊंगा. ऐसे ही सामा को दिखाया था जो ये राइट कर रहा है. तो ये बस खाली सी में भी नहीं, ये पाइथन में भी ऐसे ही होता है. मतलब ये प्रिंट कर रहे हैं ना, ये भी राइट का ही इस्तेमाल करता है. अगर हम इनडायरेक्टली दिखे तो हम लोग इसको देख सकते हैं. बस आप लोग को एक तो एल क्या बोलते हैं टेम्प. हाँ, यहाँ पे एक तो कमांड लिखा है जो क्या कर रहा है आपका. यहाँ पर पी एम आई AUX मतलब पूरा सिस्टम उन लोगों को दिखा दो, और यहाँ से प्रोसेस को ग्रैब कर लो. ग्रैब मतलब कि जो भी प्रोसेस चल रहा है हम लोग का, वैसे ही ग्रैब करेगा हेलो. उसके बाद में ये AWK क्या करेगा, जो भी हम लोग का प्रिंट करेगा, और जो सेकंड हम लोग का सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा, हम लोग का जो भी सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा, जो ये सब फाइल ये जो फाइल है ना हम लोग का, इसमें लिख देगा ये. और हम एस रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सिस्टम कॉल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हम एक टू हेलो dot what we are using hello. So let me take it to pi. Let me just make a new file hello.py. So I will do it. I will write a for loop for I in range range. Let take 1 to 10,000, and let define something called as import time. Time. I will tell you later on what is this time dot sleep 30 seconds. No, 20 seconds maybe. Now no, this much is not enough. This is enough. Now what I will do, print hello world. Hello India. Let's take it. Will print this much time. This loop. This will run this much time. 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It will run 10 lakhs time, and it will print in the screen this hello world, hello India. Sorry. So let's run in Python 3 hello.py. It's sleeping for 30 seconds. So our program is working successfully. Let me check on time. It's working successfully or not. Yeah, it's working successfully. So I have command the program, but it will import time and time dot sleep. It will sleep for 20 seconds, and then after it will execute this for loop. Have you understand? Now I will execute, and I will execute this also. I will just give you this. You have to just copy paste this, and you can run this, or you have to change this hello, and you can change the file name as your choice. And the program has been attached, and the program process ID is 684. So let's hold on for some time. Yeah, done.
execution have been finished, and we have interrupt the process. So what you have to see, temp and trace to dot text. You can see I do 6 in it. First I will show, see the magic happens in here, right? If we copy this and do nano dot c dot c, and I will write in function called as void main. Now we have to not give this, no needed. I will just give this and this colon, and I will just gcc minus c dot c compiled, and it giving me error. I know about that. I just forgot to give that. So right have been not declared, but it would still work. See, a dot out. See, hello India. If you want to cross check, you can do it easily. Let me take one more thing. I have not defined one thing. I will discuss later on. This is a compiler is so intelligent, so it's giving warning, but still working. See, hello India still working, and you can see IA is gone vanished due to we have to increase this to 15. India IA means 4. Sorry. But you can see it's not giving /n because of 15. Just we have to add one more 15. So I think you have understand this. This is directly invoking the system call, not from the printf. It's not working from printf. But if you see this file, you can see one more interesting thing in this. Just let me just skip this all. Select is a command. It's executing this for time sleep, and how many uniseconds have been left to finish this time out. Means to finish the 20 seconds, it takes how much time. So this is the select program. If I just copy paste this in C, it will work, but we have to do some technical things to define this. So it's simple, like write function. So हम जो कंट्रोल C दबाया था इस टाइम, हाँ, तो ये जो राइट फंक्शन आप लोग तो समझ गए होंगे, ये प्रिंट करने के लिए काम आता है. ये डायरेक्टली सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब कर्नल को डायरेक्टली इन्वोक करता ही है. तो यहाँ पर हम लोग का सिस्टम हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं, इंटरप्ट कर लेते हैं प्रोग्राम. टू बी रिस्टार्टेड विद दी ऐसे रिस्टार्ट इज सेट, और यहाँ पे बोल रहे हैं सिक इनिट. सिक इनिट मतलब सिस्टम इंटरप्ट हो गया. क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल सी दबाया था, और इसके वजह से यहाँ पर सेवरल डेफिनेशंस अराइव्ड हो गया कि ये देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इंटरप्ट हुआ था, लास्ट प्रोग्राम का डेट बताया, और यहाँ पर लोग देखिए इसमें भी राइट इस्तेमाल होता है, पर ये आउटपुट ये 1 to 3 यहाँ पर 3 मोड होता है इसके लिए. तो ये आउटपुट के लिए होता है, एक तो इनपुट के लिए होता है. तो ये सेकंड मोड में गया है. और यहाँ पर ये देखिए इसमें भी ट्रेस बैक एरर दिखा रहा है, और ये 35 है. तो आप लोग देख सकते हैं एरर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली इंटरप्ट करते हैं प्रोग्राम को, सो देखिए यहाँ पर हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, पर ये हम जो एस्ट्रेस किया है हमको यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है प्रोग्राम, और हमको दिखा रहा है कि प्रोग्राम क्या क्या चेंजेस किया कंट्रोल सी करवाने के बाद. तो वो इम्पोर्ट किया, वो फॉर लूप चलाया. देखिए यहाँ पर /n दिखा हुआ है, /n. देखिए ये इम्पोर्ट कैसे किया ये हर एक चीज़ को, तो ये ऐसा किया है ये सब चीज़. तो की इंटरप्ट हुआ है, और यहाँ पर ये आप स्टोर कर रहा है हर एक चीज़ जो कर्नल में चेंजेस हुए. तो ये सिंपल चीज़ था. और अभी हम यहाँ पर आपको एल ट्रीज दिखाएंगे. Let's make it 3 and execute it again.
Oh, sorry, I just forgot about this. Let's cancel this and again run it. Time attached to 737. I have to see this. No problem, I will see this. Why it's happening? Yeah, done. Now I can place this program and let me check why it's giving me error. M trees. Yeah. See, now the case has been totally changed due to L trace. It's giving me all libraries it's using. See, this is the damn thing I'm talking about. Means it's using all the libraries, functions, and whatever. And me too, I don't know about this. I have to research on it line by line. Then only I can know it about that. But this is too much information about libraries. And this is the free module, which is freeing the memory. I think maybe I'm not sure, but I have to see. But I can see. Just take to Google it. Everything you don't understand, I just Google it. Oh, sorry. I have to just move this two things. Yeah, now it will give. See, free is also a what print function. So free is yeah. I was right. It was for delocates the previously located memory, as you can see in here also. So I was right. So this is the topic about user mode and kernel mode. Let me give a short definition again. Where is my pen? यूजर मोड, तब जाके कोई प्रोग्राम यूजर मोड में होता है तो हम लोग के लिए वो हम जैसे ये रूट यूजर है, रूट ये एडमिन यूजर। सोचिए आप लोग कभी विंडो ओपन किए और आप लोग कभी सिस्टम 32 देखे ही होगा, तो आप लोग इसको डिलीट करने का कोशिश किया होगा, पर वो डिलीट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग के पास परमिशन नहीं होता है। और हम लोग परमिशन सेट कर सकते हैं पर पूरा चीज़ हम लोग डिलीट नहीं कर सकते अब इसका। तो इस मतलब हम लोग के पास पूरा परमिशन नहीं है। जो कर्नल के पास है, उसके पास पूरा परमिशन है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है एंड लेवल में। कर्नल के पास पूरा परमिशन होता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो भी कुछ भी। वो रिंग जीरो में होता है, रिंग जीरो, मतलब इसके पास पूरा परमिशन होता है हर एक चीज़ करने के लिए। और ये हम लोग के लिए होता है रिंग थ्री में होता है हम लोग के लिए, एप्लीकेशन लेवल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग के पास दो चीज़ आता है, एक तो आता है कर्नल और एक तो होता है यूजर मोड। ये दोनों आता है, और भी चीज़ आता है पर हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो मैनेजर है, जो कर्नल है हम लोग के लिए मैनेजर, और हम लोग का ये हो गया हम लोग के लिए यूजर मोड जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे विंडो में हम यहाँ पे ये सब चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन है जो हम लोग को विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। पर हम लोग डायरेक्टली विंडो को बोल नहीं सकते कि कोई भी चीज़ कर लो, और किस लिए कलर मोड बनाया गया है ताकि हम लोग के लिए इजी हो हर एक चीज़ समझने के लिए। और अभी मैं आपको और भी एडवांस में लेके जाऊंगा इसका। ये राइट फंक्शन आके वर्क कैसे कर रहा है, लेट्स चेक दिस। बट वी हैव टू डू, we have to just do UNI. Yeah, this is a file. If you want to understand this read write, you can use this for writing and writing in a file too, like with open and with write and close the file with this. File operations are pretty easy in Python, but in what we call as in C it's hard to do it.
सो हम आपका डेफिनेशन दिखाता हूँ यहाँ पर। ये एक तो एक्सिलर है जो बूटलिन की तरफ से है, जो हम लोग को इजी वे में हम लोग को कर्नल का फाइल्स दिखाते हैं। ये इजी वे में हम लोग को कर्नल का फाइल्स दिखाता है। और हम लोग को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आज ARM64 ये किस में इस्तेमाल होता है? एंड्रॉयड में। आकर से एप्पल में भी इस्तेमाल होने लगी है ये सब चीज़। तो हम लोग यहाँ पर ये हम लोग इसमें जा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। हम लोग को ये माइक्रो है, तो हम लोग को माइक्रो से कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये NR राइट फंक्शन डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे लेके चला गया। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, और हम यहाँ पर जिस सिस्टम कॉल में ट्रेस करेगा जो हमको सिस्टम थ्रू में रिडायरेक्ट कर लेगा। और हम लोग को यहाँ पर ही जाना है, हम लोग को लिनक्स इंक्लूड जो भी हम लोग का फाइल है .h। ये प्रोटोटाइप है एक तो, ये फंक्शन ये प्रोटोटाइप है। तो ये प्रोटोटाइप आप देख सकते हो, ये इंट fd। ये fd क्या करता है? ये फाइल डिस्क्रिप्टर है, मतलब 3 टाइप का फाइल डिस्क्रिप्टर होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। fd फाइल डिस्क्रिप्टर, हाँ तो हम आपको मैनुअल से भी दिखा सकता हूँ, पर मैनुअल ये मैन लिखेंगे हम लोग मैन, और हम लोग राइट WRITE राइट RITE राइट मैनुअल 2 में भी या इट्स 2 yeah, see the same thing is defined in here also. But auxiliary we can see that see there are several more functions you can see in here, because everything is defined in the manuals. But I want to see in here. Yeah, standard input, standard output, standard error. As we can see in there was 2. You have remembered this error. Let me just open this file 2. See in here you can see write 2 means is given an error. Standard error is returning by this function. Standard 1 means output, and standard 0 means input. We can take input from this also using assembly. So I have defined in here assembly notes are here also, so you can read and go through it. But for now I am not explaining this because I am skipping this part for now, and we are interested in this system.cs. And now I want to see this, where is this function locates? As in here as a function no libc, मतलब इसमें कोई भी लाइब्रेरी फंक्शंस इंक्लूड नहीं किए गए हैं इस ये फोल्डर में, ये सॉरी फाइल में। और ये यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर भी सेम ही डिफाइन किया हुआ है,